5 components of COSO: control environment, risk assessment, control activities, information and communication, monitoring. ये भी पहले पढ़ चुके थे, मतलब पहले जो कंपोनेंट्स वाले साइड पढ़े थे वही कंपोनेंट्स इसका भी है. फ्रेमवर्क लिस्ट 3 categories of objectives: operations objectives, compliance objectives, reporting objectives. Now, what are operations objectives? It is related to effectiveness and efficiency of entities' operation. Compliance objectives are related to entities' compliance with applicable laws and regulation. Reporting objective is related to financial and non-financial reporting to stakeholders. ठीक है, ऑपरेशंस हो गया कि इफेक्टिव ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एंटिटीज ऑपरेशन. फ्रेमवर्क लिस्ट 3 कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गया ऑपरेशन, कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग. कि एंटिटी का ऑपरेशंस इफेक्टिव है और एफिशिएंट है या नहीं. कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव्स रिलेट करता है कि एंटिटी का कंप्लायंस एप्लीकेबल है इस पर लॉ और रेगुलेशन या नहीं. रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि इट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू स्टेक होल्डर्स. व्हाट इज कोको फ्रेमवर्क? इट वॉज डेवलप्ड बाई Canadian Institute of Chartered Accountants. It includes 20 criteria for effective control in 4 areas of organization: purpose, commitment, capability, monitoring and learning. Now, what is COBIT framework? It is framework created by ISACA, Information Systems Audit and Control Association, ISACA, for IT governance and management. ठीक है, IT governance and management. COCO framework था for effective control in 4 areas of organization. COBIT is for IT governance and management. So COBIT has 34 high-level processes that cover 210 control objectives categorized in 4 domains: planning and organization, acquisition and implementation, delivery and support, and monitoring and evaluation. Now last is Sarbanes-Oxley Section 404. Section 404 of Sarbanes-Oxley Act mandates that all publicly traded companies must establish internal control for financial reporting and must document, test, and maintain those controls to ensure their effectiveness. ठीक है, अब ये चारों पॉइंट्स का एक बार फिर से समराइज किए क्यों बना था वो एक बार बस वो रीड कर रहे हैं. COSO framework was established was